Hello friends, Hare Krishna, Jai Jinendra. Today we are starting with the essay 240, which is Auditor's Responsibilities relating to the responsibility relating to fraud in an in an audit of financial statement. FS means financial statement. See, first of all, guys, in audit, remembering essay and along with their names would be a great impact on the examiner's point of view. He will think he would be able to think that this guy has prepared a much about the names and the audit overall subject, because many of the students are not able to remember either essay number or essay name or both. So you would be definitely in a good position if you are able to remember the both and produce the same in the exam. Now, first of all, the definition of a fraud as per the essay 240 is fraud is fraud fraud means an intentional act. It is an intentional act which is used for what? Intentional act used for deception. Used for deception. Deceptions mean dhokha. Used for deception to obtain what? Unjust or illegal advantage. Illegal advantage. Now, what do you mean by illegal advantage? Illegal advantage is when it is not to the lawful purposes of an organization or of an firm. Means the auditor tries to find out the fraud. Fraud is intentional act. Fraud is ऑडिट अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा उसमें, मतलब वो हम आगे देखेंगे। पहले तो फ्रॉड क्यों करते हैं, इंटेंशन अंदर से इच्छा होती है कि हमें फ्रॉड करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट टू टाइप्स टू टाइप्स ऑफ misstatements. Misstatements, remember the word, it is not material misstatement, it is misstatement, मतलब it can be material, it cannot be material. Those two are fraud and error. Now, what is error? Error is an unintentional act which is not done with an intention to obtain any illegal advantage from others, whereas fraud is done only for the purpose to obtain an illegal advantage. Also, it can be done by fraud, can be done by following peoples. First, it can be done by third parties, employees, TCWG, then management, then employees, and lastly third parties. However, this hierarchy is depicting the real practical life, means as TCWG has the highest power, it is in the position to do more and more material fraud, whereas management has low powers, then employees, then third parties, and so on. Now, fraud can be also of two types. So, two types. First one is fraudulent financial reporting. Fraudulent financial reporting, whereas the second one is misappropriation of assets. Misappropriation of assets.
Now, first of all, what is fraudulent financial reporting? Means whenever any four of these does any fraudulent financial reporting. Financial reporting means they do any act which is not in accordance with the SA number or AS मतलब accounting standard or as per the law practices of the firm. For example, it is a practice of the firm to charge depreciation of 10%, but to save taxes and charge more expense as a depreciation, any four, most probably these two, charge depreciation at the rate of 20%, so that they would be able to show their expenses more and profit less, and मतलब give less taxes and save more profit. Now, misappropriation of asset is again of two types. First one is misappropriation of goods. Misappropriation of goods. And second one is defalcation of cash. Defalcation of cash. This is the most difficult, one of the most difficult, not most, it is one of the most difficult to find out, as no person, no auditor would be in a position to determine the exact amount of fraud happened in the cash balance, because nobody is keeping a check or eye on the cash book or cash ledger every day, because all of have their own responsibilities. Now, what are the main reasons for committing fraud? Main reasons for committing fraud, or it can also be said as fraud risk factors, FRF, fraud risk factors. Fraud risk factors. There are mainly three reasons. First, there is a pressure to commit fraud. Pressure to commit fraud. To commit fraud. From whom? From whom the pressure is being given? It can be from outside or inside sources. Outside or inside sources of an organization. To achieve what? To achieve illegal advantage. Once again, or unrealistic financial outcome, which is not practical. Means there is a pressure to commit fraud from outside or inside sources to obtain unrealistic financial outcome. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी में एक पर्सन था, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, तो TCWG ने एम्प्लॉय को ऐसा बोला, TCWG मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उसने एम्प्लॉय को ऐसा बोला कि इस बार है ना, तुझे कैश बुक में 5 लाख रुपए कम दिखाने हैं। तो उसने तो ऑब्वियसली पूछा होगा क्यों, लेकिन सामने से जवाब आया कि बस तुझे दिखाना है तो दिखाने, जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स। तो दिस इज प्रेशर. The TCWG is pressurizing employee to commit fraud from which sources? From inside sources, because TCWG is within the organization. Second, there is a perceived opportunity to convey the fraud. Perceived opportunity means wherever there is lack of internal control system, there is a perceived opportunity. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फॉर्म है जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही वीक है, जो इजीली ओवरराइड हो सकती है। ओवरराइड मतलब कोई भी उसको तोड़ सकता है, इजीली ओवररिडन। कोई ऐसी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जिसको कोई भी इजीली ओवरराइड कर सकता है, तो इन दिस द पर्सन कमिटिंग द फ्रॉड विल हैव अ परस्यूड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसको पता है दैट आई वोंट बी कॉट, बिकॉज कोई उतनी सिस्टम स्ट्रांग ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज वो 5 लाख लेके चला गया कैश से, कल 50,000 ले गया, परसों 1 लाख ले गया,
तो उसको पता है कि कुछ भी कर लो मैं पकड़ा तो जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जैसे चेक रखना होता है कैश बुक पे कितना कैश आया गया, कैश रजिस्टर पे, वो कोई रखता नहीं है उतना. तो देयर इज अ परस्यूड अपॉर्चुनिटी of internal control system easily overridden. And the third one and the last one is rationalized behavior. Rationalization और rationalized behavior. उसका behavior है ऐसा या फिर उसका attitude है, मतलब वो बोलते हैं ना कि ये तो चोरी है साला, कि भाई ये तो चोरी करेगा ही. उसके बिहेवियर में ही ऐसा है, उसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि वो चोरी के बिना रह ही नहीं सकता. वो कुछ भी करेगा तो चोरी तो करेगा ही, और डिसऑनेस्ट एक्ट तो करेगा ही. डिसऑनेस्ट एक्ट करेगा ही, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता, उसके बिना उसका जीवन ही नहीं है. मतलब ऐसे कोई एम्प्लॉय होते हैं ना जो मतलब पूरा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से चिढ़ गए, तो उसके एटीट्यूड में यह जा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के साथ मुझे कुछ गलत करना है जब तक मैं नोटिस पीरियड पे हूँ या कुछ भी, तो वो ऐसा डिसऑनेस्ट एक्ट करेगा ही. नाउ हाउ कैन एफएफआर बी डन? वेज ऑफ डूइंग एफएफआर. वेज ऑफ एफएफआर, fraudulent financial reporting. Basically there are two ways, only two ways, but there is also subcategories within the same. First is manipulation. First is manipulation of accounts. I hope you know the meaning of manipulation. If you don't, manipulation मतलब छेड़खानी करना, मतलब to manipulate the data, to change the data or accounts from the original source from which it was derived. Second was misrepresentation, or intentional omission. Misrepresentation और intentional omission मतलब जानबूझ के, intentional मतलब जानबूझ के उसने कुछ omit कर दिया है record करना. Intentionally omission of the account or records or any journals or any other thing. And the third one is this is not the not I would say not a way, but still it is included in ICI module, so I will cover it. This third is misapplication of accounting principle, accounting principles. For example, a person is charging depreciation on land, means he is defying, मतलब DEFYING, he is breaking any accounting principle. Also, a person is of view that I would record an expense whenever it is actually incurred. Incurred मतलब actually paid. So this is misapplication of the accounting principle, which is accrual basis, because he is not following. In accounts it is said that you should record an expense whenever it is accrued or due, but here he is recording the expense whenever it is paid. So these are the following ways of FFR. Now here are some other subcategories of ways of FFR also. For example, first is manipulation of account or falsification. Manipulation, or also known as फॉल्सिफिकेशन, मतलब झूठा मूठा दिखाना, अकाउंट जो सही में नहीं है तो अब भी. फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. उसमें पहले तो सबसे मेन थिंग, बाय whom it is usually done and what is the requirement of it. It is usually done by remember the words, higher management cadre, higher management cadre, CADRE, higher management cadre, and it requires and it requires
ग्रेट टैक्ट, टैक्ट मतलब इंटेलिजेंस, ग्रेट टैक्ट मीन्स intelligence or tactics or skills, because it is very difficult to find such fraud. Now, the first question all of us must be having is why manipulation of accounts is done. There are two questions. Why manipulation of accounts, and second, how manipulation. पहला तो what is why. If your why is clear, your how is easy. How manipulation. Why manipulation? How manipulation. First, to avoid the incidence of tax. To avoid incidence of tax means many firms or many TCWG must be doing this manipulation of accounts to avoid the incidence of tax or to evade tax or to reduce their tax liability, which is actually not real. Means, for example, they are having a tax liability of 1 crore, but they are manipulating the accounts in a way that their tax liability will be reduced to 50 lakhs. So to avoid the incidence of tax, which is not ethical, or I would say unethical. Second, I would say that second point is basically dividend. डिविडेंड में 2 पॉइंट हैं, डिविडेंड में भी 2 पॉइंट्स. डिविडेंड सब कैटेगरीज. whenever there is a insufficient profit है, insufficient profit is there, still there is an insufficient profit, still they are doing this manipulation. They would मतलब they would be in a position to show their profits very high, लिखा है. So the people would be in a position to judge that this firm is doing well, so they would declare the dividend. अगर उन्होंने dividend declare किया तो उससे क्या होगा, उससे शेयर की प्राइस बढ़ेगी और TCWG या फिर कोई मैनेजमेंट है उनके होल्डिंग में जो शेयर होंगे उनकी भी प्राइस बढ़ेगी, and directly it will eventually their portfolio value will also increase. Insufficient profit है, still declared dividend, और उसमें ही दूसरा पॉइंट है कि प्रॉफिट बहुत है, sufficient profit, still they are withholding dividend. For what? They are withholding dividend for the purpose of short selling. मतलब अब सबको ऐसा लगेगा कि फर्म के पास प्रॉफिट तो है नहीं क्योंकि उन्होंने मैनिपुलेशन करके प्रॉफिट कम दिखाए, बट रियल में उनके पास प्रॉफिट तो है फर्म के पास, लेकिन उन्होंने सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं दिखाया और उन्होंने डिविडेंड को विथहोल्ड कर लिया है. ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि उनको शॉर्ट सेल करने हैं उनके शेयर्स, मतलब या फिर उनको अभी जैसे अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो शेयर्स के प्राइस मार्केट में फॉर एग्जांपल 100 चल रहे होंगे, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो 120 प्राइस हो जाते, बिकॉज द डिमांड ऑफ द शेयर विल इवेंचुअली राइज. तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट दिखा है उन्होंने तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो उनको अपने पोर्टफोलियो में ये शेयर लेने होंगे मैनेजमेंट या TCW के, तो उनको ज्यादा प्राइस में लेने पड़ेंगे. लेकिन अब उन्होंने प्रॉफिट कम दिखाए या मैनिपुलेटेड दिखाए, तो 100 का 102 या 98 हुआ होगा, तो उन लोगों को तो अच्छा ही ना, उन लोगों को तो कम प्राइस में ज्यादा शेयर मिल जाएंगे. किनको? मैनेजमेंट या TCWG को, और इसीलिए वो विथहोल्ड करेंगे हमारा डिविडेंड. And the third point is remuneration. To declare the remuneration whenever the remuneration is decided upon is payable as per the profit. मतलब अगर कोई मैनेजमेंट का रेम्यूनरेशन है, मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन है, तो वो जानबूझ के मैनिपुलेट करेंगे अकाउंट, जिससे एज पर द सेक्शन 198 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का कि अगर कोई भी फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो मैक्सिमम 11% मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन हो सकता है. तो जितना प्रॉफिट ज्यादा उसका 11% उतना ज्यादा, तो जितना 11% उसका ज्यादा तो इनको रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट को ज्यादा मिलेगा. तो रेम्यूनरेशन व्हेन
payable as per profit, and payable as per section 198 of Companies Act 2013। तो जब भी ऐसा होता है तो वो लोग प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे by doing the manipulation of accounts। Now the question is how manipulation of accounts is done। Four ways are there only, मतलब only not but majorly these are the four ways। First, inflating, or second is suppressing, inflating or suppressing purchases or expenses। Second, inflating or suppressing sales or incomes। Third is inflating or deflating closing inventory value, मतलब inventory value। The fourth one was not adjusting, मतलब outstanding liabilities and prepaid expenses are not shown। Prepaid expenses are not recorded or not transacted or not shown or recorded। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। इन्फ्लेटिंग या सप्रेसिंग परचेजेस और एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल उनको अगर प्रॉफिट ज्यादा रखना है तो वो एक्सपेंस और परचेज दोनों को कम रखेंगे, जिससे डेबिट साइड ऑफ द P&L will be automatically reduced and the credit side will automatically increase, which would eventually lead the organization in a profitable way। The same reverse situation in the case of sales and income, where the firm want to reduce their profit, then they would reduce their sales or income value, but they would keep intact their expenses value। Third, inflating or deflating। Now you must be having doubt why the deflating word is used। So deflating is particularly used whenever there is a topic regarding inventory valuation or stock valuation or any मेन बिजनेस वैल्यूएशन। मतलब अगर किसी का मेन बिजनेस इन्वेंट्री है तो उसको हम डिफ्लेट बोलेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हुई है तो उसका मतलब डिफ्लेट हुई है उसकी वैल्यू, इन्फ्लेट नहीं हुई, जैसे हमारा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है जीडीपी में। एंड द फोर्थ वन इज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट शोन। फॉर एग्जांपल, in current year if we are having outstanding salary of 1 crore but we have not recorded in the P&L in the under the subhead of salaries, then it means we are TCWG want the organization to be more profitable। मतलब he want to show the organization more profitable, क्योंकि उसने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया है तो प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। And the two are the self-explanatory, which are misrepresentation or intentional omission, and the second is misapplication of the accounting principles। Now what is misrepresentation or intentional omissions? In this, the management or TCWG or any other person from these four would do what? They would misrepresent their accounting records, their liabilities, their expenses, and and या फिर or they would intentionally omit any entry or any major transaction or any major event which would affect the stakeholders point of view for the investment in the organization। Third is misapplication of accounting principles। Now what are the techniques by which management override control? Techniques by which management override control। So there is a mnemonic for the same, and it is MIRAC,
Mirak. First one is misstatement in the events and transaction. They would they would do what? They would misstate events and transactions affecting the user point of view of seeing the account's profit in the investable business. Misstatements in the events and transactions. Second one is I. I means inappropriately adjusting inappropriately adjusting accounting accounting assumptions. इसमें अब क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, as we all know, bad debt reserves, provision for bad debts, or any other contingency is decided upon the assumptions. मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब अकाउंटेंट को ऐसा लगता है कि इस साल 5% बैड डेट हो सकता है, लेकिन अब उसको तो फ्रॉड करना है, तो वो क्या करेगा? 5% की जगह पे वो दिखाएगा 15%। तो उससे क्या हुआ? हमने ज्यादा रिजर्व क्रिएट किया, तो प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम करना पड़ेगा, टैक्स का इंसिडेंस कम आएगा, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट दिखा के वो लोग डिविडेंड में भी फायदा ले लेंगे। नाउ आर मीन्स रिकॉर्डिंग fictitious journal entries. मतलब journal entries which has not occurred in real life, but they have recorded such journal entries, and that too at the end of accounting period, so which would not be easily visible to the auditor, as he would be least concerns regarding the adjustment near the balance sheet date. It is also known as bogus entries. These entries would mislead the investor. Now A means altering मतलब change करना altering means change करना what? Records and terms and terms and conditions with respect to significant transactions मतलब फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होने वाला है फर्म का किसी एक क्लाइंट के साथ, तो उसको ना दिखाने के लिए हम ऐसा दिखाएंगे कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा है कि ये सब सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन तुमको, मतलब हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा हम लिख देंगे कि ये ट्रांजेक्शन एज कॉन्फिडेंशियल ज़्यादा है, तो हम वो नहीं दिखाएंगे। वैसे उसमें उतना कुछ कॉन्फिडेंशियल था नहीं, तो भी हम ऐसे फेक दिखाएंगे। नाउ सी एंड अदर सी। फर्स्ट सी इज concealing material facts. कंसीलिंग मतलब छुपाना, हाइड करना। कंसीलिंग मतलब कुछ छुपाना या फिर हाइड करना। कंसीलिंग मटेरियल फैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, हमें कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में किसी व्यूअर को या यूजर को ऐसा बताना था कि हमारे नोट्स टू अकाउंट में हमने इस बार जो लैंड बेची है वो हमने बिलो कॉस्ट बेची है, और वो भी ये बंदे को जो हमारा रिलेटेड पार्टी है एज पर AS 18। लेकिन तो अभी हमने वो नहीं बताया और हमने कंसील कर लिया ये मटेरियल फैक्ट। ये मटेरियल बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज विद द रिलेटेड पार्टी एज पर द AS 18 और एनी अदर ऐसे कंसर्न, तो वो हमने दिखाया नहीं है, तो ये तो मटेरियल फैक्ट हो गया। लेकिन वो हमने कंसील किया है क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मतलब मैनेजमेंट को फ्रॉड करना है, उन लोगों को फ्रॉड करना है। और लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस are structured in a way
which would mislead or confuse what? Which would mislead or confuse, mislead or misrepresent financial statements or users of financial statement. So these are the basic points regarding this. Now in the next lecture we will talk upon misappropriation of assets. Thank you. Jai Shri Krishna, Jai Jinendra, Jai Shri Ram.